Good morning to all. Our today's topic is power factor. So all the electrical energy which is generated, transmitted or distributed, it is in the form of alternating current. So power factor plays very important role in this. So most of the load is inductive in nature, for example, induction motors, arc lamps. So they have low lagging power factor. Now low lagging power factor is very undesirable because it causes increase in current that we will discuss in coming slides, which results in additional losses. As a result of this, it will leads to the low efficiency of the system. For favorable conditions, power factor should be close to unity as possible. So the value of power factor can be from 0 to 1. Uh, the desired is that it should be near to 1, 0.8, 0.85, 0.9 or 1. 1 is not possible. It is the ideal condition. So it should be near to 1. So what is power factor? So it is a cosine of the angle between voltage and current in an AC circuit. Here in the diagram, in the phasor diagram, you can see the first one is for purely resistive circuit. इसमें क्या है, जो करंट का कर्व है और जो वोल्टेज का कर्व है, दे आर इन फेज. मीन्स जब करंट मैक्सिमम है, जो पिंक लाइन है, इट इज फॉर करंट एंड ब्लू इज फॉर वोल्टेज. जैसे ही करंट मैक्सिमम हुआ उसी टाइम पे वोल्टेज इज ऑल्सो मैक्सिमम. When the current is zero, voltage is also zero. So this is the pure resistive circuit. But in case of inductive circuit, pure inductive circuit, you can say, in case of pure inductive circuit, the second diagram you can refer. Here when the current is maximum, voltage is not maximum. It is zero. When the current is zero, voltage is maximum. So they are 90-degree out of phase of each other. So the current lags behind the voltage by 90 degree. So it is the lagging power factor in case of purely inductive circuit. In case of capacitive circuit, in third phasor diagram, जब करंट जीरो है उस टाइम वोल्टेज मैक्सिमम है. जब करंट मैक्सिमम है तब वोल्टेज जीरो है. इस केस में करंट लीड्स द वोल्टेज बाय 90 डिग्री. तो इसमें हम कहते हैं इट इज द लीडिंग पावर फैक्टर. So there is lagging power factor in case of inductive circuit and leading power factor in case of capacitive circuit. So if the circuit is inductive, current lags behind the voltage, so it is lagging power factor. If the circuit is capacitive, then current leads the voltage, so it is leading power factor. And this is power triangle. Now the circuit voltage is V and the current lags behind this voltage by the angle phi. As you can see in the picture, it is inductive. It is for inductive load. Voltage we have taken as a reference line V, and I lags behind the voltage by angle phi. By some angle you can say it is phi. Now the circuit current can be resolved into two perpendicular components, one which is in phase with V and one which is out of phase. So which is in phase with V is the I cos phi, which is out of phase, that is at 90 degree to V, that is I sin phi. I cos phi is known as active or wattful component, and I sin theta phi is known as reactive or wattless component. Only due to this component, this reactive component I sin phi, there is the angle phi. अगर ये I sin phi zero हो, ये कुछ ना हो तो ये phi भी zero हो, तो cos zero is 1. तो उस केस में जो पावर फैक्टर होगा वो 1 होगा, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है. ये रिएक्टिव कंपोनेंट जरूर होगा ड्यू टू इंडक्टिव और कैपेसिटिव लोड्स. सो ये I sin theta, I sin phi is known as reactive or wattless component. The reactive component is a measure of the power factor. जितना ये वाला फैक्टर ज़्यादा होगा उतना ही ये जो थीटा है उसका वैल्यू बढ़ता जाएगा.
So ये reactive component है, it is a measure of the power factor. If the reactive component is small, phase angle will be small and the power factor will be high. तो इट इज डिजायर्ड कि ये रिएक्टिव कंपोनेंट स्मॉल होना चाहिए, तभी पावर फैक्टर है वो इम्प्रूव्ड होगा. नाउ यू कैन सी हियर जो कंपोनेंट इन फेज विद वोल्टेज था दैट इज, अब हम V को दो पार्ट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं. VI cos phi which is in phase with V and VI sin phi which is perpendicular to V and VI is their resultant. The hypotenuse is shown as a resultant. So VI is the resultant of VI cos phi and VI sin phi, that is active and reactive component का जो resultant है that is VI. This VI is known as apparent power and VI cos phi is known as active power and VI sin phi is reactive power. इनके जो units होंगे, active power का unit होगा किलोवाट, reactive power का जो perpendicular पे है that is kVAR and for apparent power it is VI only kVA. So power factor यहाँ पे क्या होगा, power factor basically is the cos theta. तो cos theta will be active power means base upon hypotenuse, that is apparent power. So base is active power, that is kilowatt, upon hypotenuse, that is apparent power, that is kVA. So power factor will be equal to kilowatt divided by kVA, or you can say it is reactive power divided by apparent power. This represents the power triangle. Here theta is the angle between apparent power and the true power. Cos theta is power factor. So power factor is equal to base upon hypotenuse, that is real power divided by apparent power, and on perpendicular it is reactive power, that is kVAR. Suppose a circuit draws a current of 10 ampere at a voltage of 200 volt and its power factor is 0.8 lagging, means the load is inductive. इसमें apparent power क्या होगा, that is VI. So V is 200 here and I is 10, so it is 2000 VA. Active power will be VI cos theta. V is 200, I is 10 and cos theta is 0.8 as it is given in the question. So it will be 1600 watt. Then reactive power VI sin theta. V is 200, I is 10 and sin theta now is 0.6. इसका वैल्यू हम sin square theta plus cos square theta is equal to 1 वहां से निकाल सकते हैं. 1 minus 0.8 का square then under root, this will be sin theta, so it comes out to be 0.6. तो ये इसका वैल्यू है 1200 VAR. So this circuit receives an apparent power of 2000 VA and it is able to convert only 1600 watt into active power. उसमें से सिर्फ 1600 watt it converts into active power. The reactive power is 1200 VAR and it does no useful work. It merely flows into and out of the circuit periodically. In fact, reactive power is a liability on the source because the source has to supply the additional current, that is VI, that is I sin theta. So reactive power basically does no useful work on the system. It is just a liability on the system. So these are three powers: apparent power, active power and reactive power. Now these are reasons for low power factor. Basically, low power factor is undesirable from economic point of view. Normally, the power factor of the whole load on the supply system is lower than 0.8. So these are some causes for low power factor. First are AC induction motors, whether they are single phase or three phase, these have low lagging power factor. These motors work at power factor which is extremely small on light loads.
सो अगर फुल लोड पे मोटर काम कर रही है तो उसका पावर फैक्टर नियरली 0.8 और 0.9 है. इफ दे आर वर्किंग ऑन लाइट लोड्स देन it may be 0.2 to 0.3, which is extremely low power factor. So these are the main cause for low power factors. Then is arc lamps, electric discharge lamps and industrial heating furnaces. These also operates at low power factor. Now the varying load on the system. The load on the power system is varying. During morning and evening time, the loads are high. Whereas throughout the day, the load will be small as compared to morning and evening times. So during low load periods, the supply voltage is increased, which increases the magnetization current, and this results in the decreased power factor. Disadvantages of low power factor. Now power is equal to voltage into current into power factor. तो यहाँ से करंट का वैल्यू आ जाएगा पावर डिवाइडेड बाय वोल्टेज इनटू पावर फैक्टर. अब वोल्टेज और पावर फिक्स्ड हैं. पावर जितना जनरेटिंग स्टेशन पे जनरेट हुआ और जितना हमने ट्रांसमिट किया और हमने सब स्टेशंस पे रिसीव किया, दैट विल बी कांस्टेंट. और जो वोल्टेज है सिस्टम वोल्टेज, दैट विल बी रिमेन फिक्स्ड. सो इसका मतलब जो करंट है दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर फैक्टर. जैसे ही पावर फैक्टर लोअर हुआ on then the load current will be increased or vice versa. अब लोड करंट इंक्रीज हुआ फॉर सेम अमाउंट ऑफ पावर एंड वोल्टेज, तो इट मीन्स हमें जो कंडक्टर का साइज है वो भी हमें बड़ा चाहिए, बिकॉज जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर है इट डिपेंड्स ऑन इट्स करंट कैरिंग कैपेसिटी. तो पावर और वोल्टेज सेम है बट current increase हो गया due to low power factor. It means the greater conductor size will be required to transmit or distribute a fixed amount of power at constant voltage. Now next is large kVA rating of the equipments. अब जो भी electrical machinery है like alternators, transformers, they are always rated in kVA क्योंकि at the time of manufacturing we don't know the power factor. Power factor depends on the type of load we are connecting to this machinery, as kVA is equal to kilowatt divided by power factor. This formula can be derived from the power triangle. It means kVA rating of the equipment is inversely proportional to the power factor. अब अगर लो पावर फैक्टर होगा तो इट मीन्स केवीए रेटिंग है जो इक्विपमेंट का दैट हैज टू बी मेड मोर. इट मीन्स द इक्विपमेंट will be expensive and they are larger for the same kilowatt power delivering but for low power factor. For example, take the case of a single phase AC motor. उसका जो इनपुट है that is 10 किलोवाट on full load. टर्मिनल वोल्टेज उसका 250 वोल्ट है. अगर यूनिटी पावर फैक्टर है तो जो इनपुट फुल लोड करंट होगा वो होगा 10,000 डिवाइडेड बाय 250 मींस पावर डिवाइडेड बाय वोल्ट, पावर इन वॉट एंड डिवाइडेड बाय वोल्ट्स, इट कम्स आउट टू बी 40 एम्पियर. अगर पावर फैक्टर 0.8 है तो इस केस में जो केवीए होगा वो होगा किलोवाट डिवाइडेड बाय पावर फैक्टर दैट इज 10 डिवाइडेड बाय 0.8. नाउ इट्स केवीए रेटिंग विल बी 12.5 केवीए. अब इस केस में करंट इनपुट होगा 12.5 into 1000 that is VA divided by 250. It comes out to be 50 ampere. So if the motor is worked at low power factor, here in this case it is 0.8, the cross sectional area of the supply cables and motor conductors would have to be based upon the current of 50 ampere instead of 40 ampere, which would be required at unity power factor. Means जब पावर फैक्टर यूनिटी था तब उसका जो करंट था रिक्वायर्ड, जो करंट रिक्वायर्ड था दैट वाज 40 एम्पियर. बट अगर पावर फैक्टर 0.8 हो, यूनिटी ना हो, 0.8 हो, तो उस केस में वी हैव टू कंसीडर केवीए दैट इज 12.5 केवीए. उस केस में जो करंट होगा द करंट रिक्वायरमेंट विल बी 50 एम्पियर. मीन्स अगर पावर फैक्टर लोअर हो रहा है तो जो करंट का रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ रहा है. तो हमें जो केबल्स का साइज है या मोटर कंडक्टर का साइज है वो हमें 50 एम्पियर के हिसाब से बनाना होगा.
सो लो पावर फैक्टर होने की वजह से जो कंडक्टर्स के साइज हैं, जो मोटर का साइज है, वो बढ़ जाएगा। लार्ज कॉपर लॉसेस, अब जो कंडक्टर का साइज है वो बढ़ गया, तो जो आई स्क्वायर आर लॉसेस है ऑटोमेटिकली वो भी बढ़ जाएंगे। तो दिस रिजल्ट्स इन पुअर एफिशिएंसी आल्सो। देन पुअर वोल्टेज रेगुलेशन। Now the large current at low lagging power factors cause greater voltage drops in alternators, transformers, transmission and distribution lines. This result in decreased voltage available at the supply end. So it will result into the poor voltage regulation. To improve this voltage regulation, we have to equip the system with the extra equipments like voltage regulators. Then reduce handling capacity of the system. The lagging power factor reduce the handling capacity of all the equipments of the system. This is because the reactive component of the current prevents the full utilization of installed capacity. क्योंकि जो एडिशनल करंट सप्लाई करना पड़ेगा ड्यू टू द रिएक्टिव कंपोनेंट वी आई साइन थीटा, उसका कोई यूज नहीं है सर्किट में, इट इज जस्ट फ्लोइंग इन एंड आउट ऑफ द सर्किट। तो उसका जो हम कैपेसिटी है सिस्टम का, उसका हम फुली यूज नहीं कर पा रहे बिकॉज उसको कुछ एडिशनल करंट भी देना पड़ रहा है जिसका सिस्टम में कोई यूजफुल काम नहीं है। Now these are some methods to improve power factor. First one is static capacitors and second is synchronous condenser. अब ये 3 फेज लोड है, ये हमने कैपेसिटर लगाए हैं। The first diagram is for delta connected capacitor bank and second is for star connected. So capacitor banks can be connected in star as well as delta, but practically they are connected in delta. So in parallel the capacitors are connected to improve the power factor. So the power factor can be improved by connecting capacitors in parallel with the equipment which are operating at lagging power factors. Now the capacitor draws a leading current which partly or completely neutralizes the lagging reactive component. Now this raises the power factor. Capacitors can be connected in star or in delta. Now what are the advantages for using capacitor banks for improving the power factor? They have low losses because they have no moving parts. Therefore, there is little maintenance required. They can be easily installed and requires no foundation. Now, these are some disadvantages for using capacitors. They have short service life from 8 to 10 years. They are easily damaged if the voltage exceeds the rated value. So once the capacitors are damaged, their repair is very uneconomical. So here you can see capacitor is connected in parallel to the load. Load here is represented by R plus L. This is the inductive load. अब जो voltage है that we have taken as a reference V, अब जो load ले रहा है current that is IL. तो ये इंडक्टिव लोड होने की वजह से जो IL है that is lagging behind the voltage by angle phi L. Now this is lagging. हमने इस एंगल को इम्प्रूव करना है बिकॉज ये एंगल जितना बड़ा होगा उतना पावर फैक्टर पुअर होगा। हमने इस एंगल को स्मॉल करना है, तो क्या किया, इसके पैरेलल में कैपेसिटर लगा दिया। अब कैपेसिटर का जो प्रॉपर्टी है कि इट विल ड्रॉ द लीडिंग करंट फ्रॉम द सप्लाई। अब ये कैपेसिटर ड्रॉ करेगा IC. सो दिस IC इज लीडिंग एट 90 डिग्री फ्रॉम द वोल्टेज। अब दो करंट हैं IL और IC और इनका जो रिजल्टेंट होगा वो इन दोनों के इन बिटवीन होगा, दैट इज I. अब जो रिजल्टेंट करंट है दैट इज लैगिंग बिहाइंड द वोल्टेज बाय एंगल फाई। अब ये एंगल जो फाई है इट इज लेस देन फाई L, तो एंगल will get improved and the power factor will also get improved by connecting capacitor in parallel with the load because it is taking leading current from the supply. The second method to improve power factor is synchronous condenser.
अब जो सिंक्रोनस मोटर है उसका प्रॉपर्टी क्या है कि जब भी उसका ओवर एक्साइटेशन होगा तो it will take leading current from the supply. It means it will behave as a capacitor. So a synchronous motor takes a leading current when overexcited and therefore they behaves as a capacitor. So an overexcited synchronous motor running on no load is known as synchronous condenser. जब ऐसी मशीन को हम कनेक्ट कर देते हैं पैरेलल में सप्लाई के तो it will take leading current. So it will improve the power factor, means it will partly neutralizes the lagging reactive component of the load, therefore the power factor will get improved. So here you can see the synchronous motor is connected in which is known as synchronous condenser also. So it is connected in parallel with the load. अब ये मोटर लेगी IM करंट. अब ये एज अ कैपेसिटर काम कर रहा है बिकॉज हमने इसको ओवर एक्साइटेशन दिया इसके फील्ड को. अब ओवर एक्साइटेशन की वजह से ये लीडिंग करंट ड्रॉ करेगा फ्रॉम द सप्लाई. नाउ यू कैन सी ऑन द राइट हैंड साइड इन द फेजर डायग्राम V इज द वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज. अब जो लोड ले रहा है करंट दैट इज IL. अब ये IL लैग करेगा phi L बाय एंगल phi L फ्रॉम द वोल्टेज. अब हमने सिंक्रोनस कंडेंसर कनेक्ट कर दिया पैरेलल में, ये लेगा करंट IM. अगर तो इस मोटर में कोई लॉस नहीं है तो आइडियली इट विल लीड एट 90 डिग्री फ्रॉम द वोल्टेज, बट ऐसा नहीं है, मोटर में कुछ लॉसेस हैं तो 90 से कम एंगल पे लीड करेगा ये बाय एंगल phi M. तो phi M से ये IM करंट लीड करेगा फ्रॉम V. अब IM और IL का जो रिजल्टेंट होगा दैट विल लाई in between these currents, so that will be I. जो I है वो लैग करेगा V से phi, तो the power factor will get improved because पहले जो करंट लैग कर रहा था that is phi L, now the current lagging by an angle phi from the voltage which is the reduced angle, so the power factor will get improved. Advantages. सिंक्रोनस कंडेंसर को यूज करने के क्या एडवांटेजेस हैं, जो हम पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए सिंक्रोनस कंडेंसर अगर यूज करेंगे उसके एडवांटेजेस क्या हैं. बाय वेरिंग द फील्ड एक्साइटेशन. अब जो फील्ड का एक्साइटेशन है वो हम डीसी सोर्स से कर रहे हैं, उसको हम वेरी कर सकते हैं. तो जो मैग्नीट्यूड है करंट ड्रॉन बाय द मोटर, जो मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट ड्रॉन बाय द मोटर दे कैन बी चेंज्ड बाय एनी अमाउंट. सो इसमें हम स्टेपलेस कंट्रोल ऑफ पावर फैक्टर कैन बी अचीव्ड, क्योंकि उस केस में जो हमने कैपेसिटर्स कर रहे हैं उसमें हमें स्टेप्स में कैपेसिटर रिमूव या इन द सर्किट लेके आने पड़ेंगे, बट इन दिस केस ओनली बाय वेरिंग द एक्साइटेशन वी कैन चेंज द करंट ड्रॉन बाय द मोटर. So here you can achieve stepless control of power factor. Then second is the motor winding has high thermal stability to short circuit currents, and then faults can be removed easily. These are some disadvantages of using synchronous condenser for power factor improvement. First one is there are considerable losses in the motor. Then the maintenance cost of synchronous condensers or synchronous motor is high. It produces noise, whereas the capacitors are noiseless. As a synchronous motor has no self-starting torque, therefore an additional equipment is required for this purpose. Synchronous motors are not self-starting, so हमें additional equipment चाहिए उस मोटर को start करने के लिए. So these are some disadvantages.